My lovely students, welcome to Mathological. This is the 15th session of CAT DILR 100 series, and in this series, you'll be doing total 100 DILR sets for CAT 2026 examination. Start करते हैं session, and if you're not already subscribed to the channel, then make sure to subscribe to the channel. Also press the bell icon और साथ में session को भी like कर देना. You can also message me on Telegram at adityakt for any questions or queries regarding your preparation. So the set for today, this is the set, and this is the set based on scheduling of tests for Vidya Bharti School, followed by 5 questions in total. So pause the video and try to solve the set. Then only watch the solution. So let us read the caselet first. Vidya Bharti School is scheduling the monthly tests for classes 6 to 10 over 5 consecutive days from Monday to Friday. Each class has one test per day, and the 5 subjects are mathematics, science, social science, Hindi, and English. Further, on each day, each subject is tested in one class, and each class tests a different subject test each day. और फिर हमें अकॉर्डिंगली कंडीशंस गिवन है. तो बेसिकली क्या है, देयर आर 5 क्लासेस, क्लास 6, 7, 8, 9 and 10, and there are 5 days, Monday to Friday, and there are 5 subjects, mathematics, science, social science, Hindi and English. So every day one test is conducted for one class, isn't it so? Total 5 tests हैं. So for every day, for example, for one particular class, let us say class 6, for every day there will be a different test, and every day for one class, for at least one class, exactly one class, there will be a subject test, isn't it so? यानी कि सोशल साइंस का टेस्ट हो सकता है क्लास 6 के लिए मंडे को, और फिर ट्यूसडे को हो गया किसी और क्लास के लिए, वेडनेसडे को किसी और क्लास के लिए होगा, थर्सडे को किसी और क्लास के लिए, और फ्राइडे को किसी और क्लास के लिए. दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड दैट ऑन ईच डे ईच सब्जेक्ट इज टेस्टेड इन वन क्लास एंड ईच क्लास टेक्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट टेस्ट ईच डे. अब हमें अकॉर्डिंगली मैनेज करना है, अरेंज करना है इन सारी की सारी वैल्यूज को. तो टेबल बना लेते हैं अपना फॉर 5 क्लासेस, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 एंड क्लास 10. for 5 days. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे. अब कंडीशन है उनको पढ़ते हैं, और उससे पहले क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं. क्वेश्चन सारे के सारे हमारे जो है दोज आर काइंड ऑफ डिटरमिनिस्टिक एक्सेप्ट द लास्ट क्वेश्चन, बट लास्ट क्वेश्चन में एडिशनल कंडीशन गिवन है, तो मे बी हमारा जो टेबल है वो प्रॉपर बन जाएगा. फर्स्ट कंडीशन कह रहा है इन क्लास 6 द सोशल साइंस टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन वेडनेसडे एंड इज शेड्यूल्ड आफ्टर मैथमेटिक्स टेस्ट. क्लास 6 के लिए सोशल साइंस टेस्ट का गिवन है शेड्यूल, दैट इज ऑन वेडनेसडे फॉर क्लास 6. ऐसा इन शॉर्ट, एंड इट इज शेड्यूल्ड आफ्टर मैथमेटिक्स टेस्ट. तो मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6 is either on Monday or on Tuesday. In every class except class 7, the science test is scheduled after the English test. So English test is conducted for every other class before the science test, except class 7. So what does this imply? So let us suppose there is a class for which English test is on Monday. So if English test is on Monday for that class, then science test will be either on Tuesday or Wednesday or Thursday or Friday. Isn't it so? Any day out of 4 days, because science test must be conducted after the English test. And if for some class English test is on Tuesday, because डेफिनेटली एक क्लास के लिए मंडे को होगा, एक को लिए ट्यूसडे को होगा, एक के लिए वेडनेसडे को, एक के लिए थर्सडे को, और फिर एक क्लास के लिए फ्राइडे को. सो ऑल डेज इंग्लिश टेस्ट विल बी फॉर एक्जैक्टली वन क्लास. सो ट्यूसडे को जिस क्लास के लिए होगा, फॉर दैट क्लास साइंस टेस्ट मस्ट बी ईदर ऑन वेडनेसडे और ऑन थर्सडे और ऑन फ्राइडे. फॉर द क्लास फॉर विच इंग्लिश टेस्ट इज ऑन वेडनेसडे, the science test can be on Thursday or Friday. दो ही options possible हैं. For the class for which English test is on Thursday, the science test must be on Friday. There is no other option. And for class for which English test is on Friday, we have no options. That is why the question is saying except class 7. Like for class 7, English test will be conducted after science test obviously, and that must be on Friday for class 7th. So class 7th का English test will be on Friday. That we know. Okay. Apart from that, if English test is scheduled on Thursday, then there is only one option available, that science test must be conducted on Friday. And if that is so, that there is only one option, तो फिर Friday वाला option Wednesday को तो खत्म हो जाता है फिर. Then English test if conducted on Wednesday, then science test must be conducted right on Friday. And by that Tuesday वाले दिन भी हमारे पास Thursday Friday दोनों खत्म हो जाते हैं. Tuesday वाले दिन Wednesday को होगा
और बाय द सेम लॉजिक वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे खत्म हो जाएंगे मंडे वाले दिन, तो मंडे को जहाँ पे साइंस इंग्लिश टेस्ट होगा वहाँ पे साइंस टेस्ट मस्ट बी ऑन ट्यूसडे. सो बेसिकली फॉर ऑल द क्लासेस एक्सेप्ट क्लास 7th, English and science test will be conducted consecutively, first English then science on the next day. So Monday and Tuesday, or Tuesday and Wednesday, Wednesday and Thursday, Thursday and Friday, except that for क्लास 7th. और क्लास 7th में साइंस टेस्ट कब होगा? बिकॉज साइंस टेस्ट के लिए ऑप्शंस ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तो फिलअप है, तो डेफिनेटली विल बी ऑन मंडे. फॉर क्लास 7th, science test will be on Monday and English test on Friday. Except this, for every other class, English and science test will be conducted consecutively. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पाओगे? क्या इस स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस समझ पाओगे? दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर केसलेट, एंड दिस वाज द कंक्लूजन that for every other class except class 7th, English and science test will be conducted consecutively on that order, in that order. Okay. अब बात करते हैं फॉर क्लास 6. एक बार फिर से क्लास 6 में हमें ये पता है कि मंडे या फिर ट्यूसडे में किसी एक दिन मैथ का टेस्ट कंडक्ट होगा, तो इधर दैट विल बी कंडक्टेड ऑन मंडे और दैट विल बी कंडक्टेड ऑन ट्यूसडे. एंड फॉर एवरी क्लास एक्सेप्ट क्लास 7th, साइंस एंड इंग्लिश टेस्ट आर कंडक्टेड कॉन्सिक्यूटिवली. तो क्या उनके पास मंडे ट्यूसडे का ऑप्शन अवेलेबल है? अवेलेबल नहीं, क्योंकि किसी एक दिन मैथ का टेस्ट कंडक्ट होगा. तो डेफिनेटली इंग्लिश एंड साइंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे for class 6th, and order will be first English then science. Okay, now last statement, mathematics test is conducted in class 9th and 10th on Wednesday and Thursday respectively. So in class 9th Wednesday को mathematics test हुआ है, और class 10th में that has been conducted on Thursday. Okay, clear? Now observe for class 7th. For class 7th, we only have 3 slots available for mathematics test, either on Tuesday or on Wednesday or on Thursday. But Wednesday को mathematics test has been conducted for class 9th, so cannot be for class 7th, क्योंकि सेम डे पे दो क्लासेस में मैथमेटिक्स हो नहीं सकता. सिमिलरली थर्सडे को भी नहीं हो सकता, तो ओनली ऑप्शन अवेलेबल इज दैट फॉर ट्यूसडे. मैथमेटिक्स टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर क्लास 7th ऑन ट्यूसडे, एंड इफ दैट इज सो, तो कैनॉट बी कंडक्टेड, मैथमेटिक्स टेस्ट कैनॉट बी कंडक्टेड ऑन ट्यूसडे फॉर क्लास 6th, सो इट मस्ट बी कंडक्टेड ऑन मंडे. तो मैथमेटिक्स टेस्ट के लिए स्लॉट हमने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का फिलअप कर लिया, तो एक ही क्लास बची है, उसमें तो फ्राइडे को होगा फॉर श्योर. नाउ ऑब्जर्व फॉर क्लास 6th, we have filled up mathematics, social science, English and science. The only subject available is remaining is Hindi. So Hindi test must be conducted on Tuesday. Okay. Now focus again on class 7th. Science, mathematics and English has been filled. Remaining tests are Hindi and social science, but social science test is conducted on Wednesday for class 6, so cannot be conducted for class 7th on Wednesday, must be on Thursday, and hence Hindi test will be conducted on Wednesday for class 7th. Okay. अब क्या फिलअप कर सकते हैं? सो अगर हम थर्सडे को ऑब्जर्व करें, थर्सडे को वी हैव इंग्लिश, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स. सो हिंदी एंड नहीं, अभी और बेटर सोच सकते हैं. क्या सोच सकते हैं? देखो, अगर हम ऑब्जर्व करें फॉर क्लास 9th, सो फॉर क्लास 9th वी हैव ईदर स्लॉट्स अवेलेबल मंडे एंड ट्यूसडे फॉर इंग्लिश एंड साइंस, और थर्सडे एंड फ्राइडे. बट थर्सडे एंड फ्राइडे को ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है फॉर क्लास 6th, सो ओनली ऑप्शन अवेलेबल फॉर इंग्लिश एंड साइंस इज फॉर मंडे एंड ट्यूसडे. सो इंग्लिश विल बी कंडक्टेड ऑन मंडे and science will be conducted on Tuesday. Okay. Now for class 10th, we have 3 slots in consecutive order, और हमें इंग्लिश और साइंस consecutively कराना है. So cannot be on Monday and Tuesday, so must be on Tuesday and Wednesday. Now for class 8th, क्योंकि बाकी सारी क्लासेस में इंग्लिश और साइंस को हमने कंडक्ट करा लिया, तो for class 8th it cannot be on Monday and Tuesday, it cannot be on Tuesday and Wednesday, so it must be on Wednesday and Thursday. So English, science and mathematics is done for class 8th. Only Hindi and social science is remaining. Hindi cannot be conducted on Tuesday, so must be social science on Tuesday and Hindi on Monday. Now on Monday, only one slot is available for class 10th, so that must be social science. And for class 10th, only option available is Hindi, so must be on Friday. And now for class 9th, English, science and mathematics is done. Social science can be on Friday and Hindi can be on Thursday. So this is the total perfection, total arrangement of the set. Clear है? पूरा सेट हमारा प्रॉपर्ली फिलअप हो गया, और एक ही ऑप्शन पॉसिबल था. यूनिक अरेंजमेंट हो रहा है हमारा. क्वेश्चंस देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे ऑफ द वीक डज क्लास 7th हैव इट्स मैथमेटिक्स टेस्ट? क्लास 7th का मैथमेटिक्स टेस्ट कब है? ट्यूसडे को है. इट इज ऑन ट्यूसडे. ऑप्शन बी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लासेस शेड्यूल्ड टू टेक इट्स सोशल साइंस टेस्ट ऑन थर्सडे? तो थर्सडे को सोशल साइंस टेस्ट इज फॉर क्लास 7th.
Option D is the answer. Which of the following statements is definitely true? Option A, class 8 takes its mathematics test on Tuesday. So class 8th का mathematics test is on Friday, not correct. Class 10th takes its English test on Monday. Class 10th English test, that is on Tuesday, not correct. Class 7th takes its social science test on Friday. Class 7th social science is on Thursday. This is not correct. So definitely last statement must be correct. Class 9th Hindi test on Thursday. So yes, that is correct. Class 9th ka Hindi test, that is on Thursday. The third question was also straightforward. Fourth one, each class is allotted one examination wing naming A, B, C, D, and E, and class 6 is not allotted wing E. Wing C is allotted to the class whose mathematics test is on Wednesday. Wing A is allotted to the class whose social science test is on Monday, and so on. Okay, so 5 wings are there: A, B, C, D, and E. And class 6 is not allotted wing E. Class 8 is allotted wing D. And wing C is allotted to the class whose mathematics test is on Wednesday. The mathematics test is on Wednesday for class 9th. So wing C is allotted to class 9th. Wing A is allotted to the class whose social science test is on Monday. So Monday social science is for class 10th. So wing A is allotted to class 10th. So 10th, 9th, and 8th is filled. So class 6 is not allotted wing E. So it must have been allotted wing B. So class 7th must be allotted wing E. So answer will be that wing allotted to class 7th will be option D. E. Next question. The school announces the daily examination sessions early morning 8 a.m., morning 10 a.m., midday 12 p.m., afternoon 2 p.m., and evening 4 p.m. Class 6 test is always scheduled in the earliest session, while class 10th test is always scheduled in the last session. Class having mathematics test on a day is scheduled immediately before the class having science test on that day. So on Wednesday, which class writes the test in afternoon session? 5 sessions are there: early morning, midday, then afternoon, and finally evening session. And class 6 is always allotted the earliest session, so that must be early morning. And class 10th is always scheduled in the last session, evening session. Apart from that, class having mathematics test on a day is scheduled immediately before the class having science test. Mathematics and science are always conducted together in this order. Okay. In this order. On Wednesday, which class writes the test in afternoon session? So Wednesday को mathematics और science का schedule क्या है? So on Wednesday, mathematics test is for class 9th and science test is for class 10th. So mathematics and science must be conducted together, and science test for class 10th. Mathematics must be for class 9th, so mathematics test must be conducted in afternoon session because they must be conducted consecutively. So answer will be that for class 9th, afternoon session test will be conducted. Option C will be the answer. अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा आंसर होता कैन नॉट बी डिटरमाइंड इन दैट केस विद द गिवन इन्फॉर्मेशन. ओके, सो दिस वाज द सेट. आई बिलीव कि ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और बढ़िया सेट था. डेफिनेटली अरेंजमेंट वॉज ट्रिकी अ बिट क्योंकि ये जो रूल था हमारा, रूल नंबर 2, दिस वाज राइट. आई होप अरेंज कर पाओगे एक बार इस बात को समझने के बाद में. ठीक है, सो इतना ही रखते हैं सेशन में. आई बिलीव की सारी की सारी बातें समझ में आई होंगी. फिर भी कहीं किसी पर्टिकुलर जगह पे डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना. सेशन कैसा लगा जरूर बताना. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. अगर सेशन पसंद आए उसको लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करना. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग.